जी सेशन स्टार्ट हो चुका है तो आप लाइव हैं स्ट्रीम। जी सेशन स्टार्ट हो चुका है तो काइंडली आप स्टार्टअप कर लें। Assalamu alaikum everyone. I hope you are all good. First of all, I want to thank you, University of Pakistan, for inviting me here. So I am Taskeen Zahra and I am UGRAD Fall 2021 alumni. And today I am here to share my experience and some guidance related to how you can apply for Global Undergrad program. So let's start. So first of all, the question is, what is UGRAD? UGRAD is a fully funded opportunity to visit US, pursue your educational opportunities and professional development goals there. So like all program is sponsored by US Department of State and the United States Educational Foundation in Pakistan. So you don't have to pay a single penny. And it is also an opportunity to share information about your culture and personal background with people in the United States and learn something from them, learn about United States culture from the people of United States. So what you will get? You will get an opportunity to make friends from around the globe, because you know that America is a melting point and like people from every country live there. So you will get chance to make friends with almost every country in the world, and as well as it is the opportunity to study in the world's best institutions, because obviously the institutions there are ranked and are accredited and they are the best. So you will get a chance to experience that what they are studying, like Americans are studying. So it will be a great professional and career opportunity for you too, and you will get to learn a lot of leadership skills, because Global UGRAD require us to meet a community leader. And here is my picture with the community leader, and she was the Indiana State Congress person. So I got a chance to meet her thanks to UGRAD. And this is how you will learn communication skills, decision making skills, time management skills, and much more. So how it is academic study program? So UGRAD is basically a one semester at a university in United States. It is a full-time non-degree cultural program, and you will be placed in different colleges, university and community colleges all across the United States. And because United States selects 100 or 50, like the number of students they will select is not like they will not announce it. So basically, all the students they select, they just scatter these students all across the United States. So it is the leadership program where you exchange cultures and break stereotypes. And you will also be the cultural ambassador of Pakistan to the US. And I am not just saying it for like metaphorically, because obviously if you are going to the US and you are Pakistani, you will represent Pakistan. But here you will get the title of cultural ambassador too. And you can also earn the cultural passport. So it is a very big thing. So these are some fields which are eligible to apply. So you see that almost all the fields that we study in Pakistan are eligible. And then the host institution placement. So the selected candidates don't have any say in what university and in which state they want to go. It is the IREX that decide that which student is going where. But all the colleges are accredited, and only those institutions that are approved by IREX, like International Board of Research and Exchanges and ECA, may host the students. And you don't have any option to choose the placement or to change the placements. So the two most important thing about Global UGRAD is community service and cultural presentations, because the Global UGRAD requires you to do 20 hours of community work.
and students do volunteer work such as in the Red Cross, Habitat for Humanity, Big Brothers, or any local secondary schools. Here am I, and I have done the community work at a preschool. So basically, the purpose of this community service is to experience the principles of community service and social responsibility in the United States. And obviously, the second part is cultural exchange. Like, you will exchange your culture throughout the program, but the Global UGRAD also requires you to make a presentation both in campus and out of the campus, and so that you can just represent your culture. And students use pictures, music, food, dance, and things like this. I have used the sum of all the things, and here's my picture with Indians, Bangladeshis, Americans, and Italians. So yeah, this is the beauty of this exchange semester. So I am saying this like it is not just an exchange semester, it is a second life. And believe me, like when you will come back, you will be the another person. So it is a golden opportunity, and I will say that don't miss this golden opportunity. Must apply for this program, and I'm wishing all of you a very good luck. So now let's come to the process or steps of Global UGRAD. So the very first one is obviously submitting an application, which you are doing now. Applications are open, and then the applications will be shortlisted. After the shortlisting of application, you will be called for interview. And when you will be selected for interview, only such as TOEFL, medical form, no objection certificate, like these do not impact your selection, but these are the steps to go to the United States. And then you will go for the visa application, visa interview, pre-departure orientation, and then departure to the United States of America. And the selection process, like it is a merit based open process, and all applications are first reviewed for technical eligibility. So I will say that you must check that if you are eligible or not, because if the application is ineligible, they will just remove the application, they will not proceed with it. The very basic eligibility applications are read, evaluated, and ranked by panel. Candidates will be selected. And then the semi-finalists will be notified via email and calls. And then the interview will be conducted from the semi-finalists, and the committee in the interview is bi-national committee, and it is composed of both the US specialists, program alumni, US embassy representatives. And I think the tentative announcement of the interview calls will be the end of January 2023. And then if you are finalist, you will be notified by call and email. And finalist group are divided into two groups, fall and spring. So half of the batch will go in fall 2023 and half will go in spring 2024. So now the process which is currently ongoing is application process. So from where you will apply, you should go to the website of United States Educational Foundation Pakistan, and you will see the application there. So application has 6 segments, and you can just save the segment. You can just save application after completing one segment, because you don't have to fill all the application in one go, because this is a very extensive application. They will ask about your personal information, their academic information, and like many other things. So after completing the application, you will receive the confirmation email. So the most important thing in application is a statement of purpose, and I was getting a lot of questions regarding the statement of purpose. So here is a format that how you should write it. So your statement of purpose should consist of 4 parts, or you can say 4 paragraphs. So the first paragraph should be of introduction. Like here you have to introduce yourself. Your introduction must be very or you can use quotations. You like the quotations that you have written, not quotation you have downloaded from internet, obviously. And then in second paragraph, you have to write about your past experience,
your past experience in extracurricular activities, that how active and you have leadership qualities. So if you have any experiences that shows that you have a good leadership activities and community development, so you should must mention it in your second paragraph of SOP. And then in third paragraph, you should write your short-term and long-term goals. And these goals shouldn't be personal. You have to write the professional goals, like goals related to your field of study, goals related to your career. And then in fourth paragraph, you have to convince them that what is the reason you wish to pursue these goals in USA, and you have to convince them that why you want global UGRAD scholarship. So you can mention any point, like anything, any initiative or any business that is happening in USA, but it is not happening in Pakistan because it is a developing country, and you are writing that you want to learn this thing from USA and you want to initiate this thing in your home country. So that will be from their country. So like you can end up your SOP like this. And here I am with some tips for SOP. So first we will see the do's, like things that you should do. But the very first thing is, like, don't use very complex or fancy English. Use simple English and avoid grammatical mistakes. So create a unique theme or thesis and use that theme throughout the essay. Do a self-assessment before writing. And like I would suggest you to write many rough drafts before writing your final SOP. Use concrete example, distinguish yourself. Like just highlight the points that differentiate you from all others. Because like last year, almost 60,000 people have applied in this, so obviously you have competition, so you have to show them that what difference you have from others. Begin with attention grabbing introduction. I have also told you about this. So end with a restatement of theme or thesis, like it's a journal paragraph writing tips, and revise it at least 3 times. Like revise it for any grammatical mistakes, any vocabulary mistakes, any spelling mistakes, and have someone else edit or proofread it, especially alumni, or you can also get it edited by your any teacher or like anyone you believe has good English skills. And write to the point, because obviously you have 250 words, so you have to follow the limit. And then there are the don'ts. So I would suggest you that don't write your autobiography, like mention some of your struggles, but don't start writing your life stories because they are not interested in it. So you have to mention all the things that I have mentioned previously, like all 4 parts. So just don't write your autobiography or resume. And don't be a clown, but gentle humor is okay. And don't try too hard to impress the reader. Like, don't show them that you are too much desperate to go to the United States. Like, you could show them that you are so motivated and you really want to go to the United States, but don't be too desperate. And don't use cliches or general statements. Don't make excuses and don't make things up. And don't be afraid to start over, because if you are feeling that your SOP is not good enough, you can always write from the scratch. So don't be afraid for doing this. So this was all about the tips, and now I will be answering your questions. So your questions are most welcome. जो भी पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं तो काइंडली अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो कमेंट बॉक्स में पुट आउट कर दे ताकि उसका आंसर किया जाए। जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जी क्वेश्चन पूछें, आप राइट करें कमेंट बॉक्स में ताकि उसका आंसर किया जा सके।
जी काइंडली अब जो स्लाइड्स हैं आप तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप तक शेयर आउट कर दी जाएंगी, ठीक है, तो आप उनको रीड आउट कर लीजिएगा, देख लीजिए। जी बच्चों के मेरे ख्याल में क्वेश्चंस अभी नहीं आ रहे हैं, शायद 4-5 सेशन हो गए हैं, उसकी वजह से बच्चों के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, या क्लियर आउट हो गए हैं, या क्या इशू है। तो आप अपने जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं आप बताना चाहें। मेन बच्चों का क्वेश्चन यही आता है, एसओपी भी आता है, स्टेटमेंट पे आता है, एंड जो वो राइट डाउन करते हैं, तो उसके अंदर जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो इनको आप सिंपल वर्ड से एक्सप्लेन कर दें, जो मिस आउट उसके अंदर जी चीज़ें वो करते हैं। जी एक्चुअली मैंने सारा कुछ कवर कर दिया था कि एसओपी किस तरीके से लिखनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार पैराफ्रेज करके बताती हूँ। सो बेसिकली एसओपी है क्या? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आपने बताना है उनको कि आपका पर्पस क्या है जाने का। अब वो आपको बताना है 250 वर्ड्स में। अब इन्हीं 250 वर्ड्स में आपने 4 पार्ट्स भी मेंशन करने हैं। द फर्स्ट थिंग शुड बी योर इंट्रोडक्शन। अब आपने इंट्रोडक्शन इतना आई कैचिंग लिखना है कि बंदा इंट्रोडक्शन देखकर ही इम्प्रेस हो जाए, वरना होता ये है क्योंकि उनके पास 60,000 प्लस एप्लीकेशंस लास्ट ईयर गई थी, तो ऑब्वियसली जो रीड करते हैं वो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि इंट्रोडक्शन अगर आपका इतना इंटरेस्टिंग नहीं है तो वो फिर एप्लीकेशन वहीं पे रिजेक्ट हो जाती है। इंट्रोडक्शन पर फोकस करें। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि सेकंड पैराग्राफ में आप मेंशन करें कि आपने कितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं। अब यूग्रेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में 2 चीज़ें देखता है। एक चीज़ ये कि आपने कम्युनिटी के लिए कितना वर्क किया है, और दूसरी चीज़ ये कि आप में कितनी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो अगर इन 2 चीज़ों को आपने रिफ्लेक्ट कर लिया अपनी एसओपी में, तो मतलब इंशाल्लाह इट विल बी सक्सेसफुल। एंड देन थर्ड पैराग्राफ में आपने अपने कैरियर या प्रोफेशनल गोल्स को मेंशन करना है कि आपके अपने फील्ड से रिलेटेड क्या गोल्स हैं, आप पढ़ाई के बाद क्या करना चाहते हो, और उन गोल्स को अगर आप इस तरह से रिलेट करें कि उन गोल्स से आप अपनी फील्ड की मदद से अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना चाहते हो, सो दैट विल बी गुड। एंड इन फोर्थ पैराग्राफ आपको ये मेंशन करना है कि यूएसए कैसे आपकी हेल्प कर रहा है वो गोल्स अचीव करने में, आप क्यों यूएसए जाना चाहते हो इन गोल्स को अचीव करने के लिए। सो बेसिकली फॉर्मेट ये है। इस अगर आपने ये फॉर्मेट समझ लिया और इसको फॉलो करके लिख ली तो इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपने मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो गुड लक। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि शुड वी अवॉइड यूजिंग टेक्निकल वर्ड्स और दे आर फाइन। Like they are fine, but I will suggest you that don't use it. Like don't use complex or like fancy English. Like you can go with a simple English, simple decent English, with no grammatical mistakes. So if you are using it, that is fine, but make sure कि आपको उसकी मीनिंग पता हो। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स यूज़ करने के चक्कर में ऐसे पैराग्राफ लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता उनकी मीनिंग, तो इस तरह से ना हो। बाकी अदरवाइज इट्स ओके। और हाँ, अगर वर्ड्स वो रिलेटेड टू फील्ड है जिसमें क्वेश्चन में कहा हुआ है तो फिर ऑब्वियसली आप यूज़ कर लें। रूल तो है ना, मतलब, लेकिन पासपोर्ट जो है वो एक सेकेंडरी चीज़ है। वो आपको तब बनवाना होगा जब आप फाइनलिस्ट हो जाएंगे, तब जब आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो आपको खुद ही ईमेल भी करेंगे, आपको टाइम भी देंगे पासपोर्ट बनाने का। आपको इस स्टेज पे पासपोर्ट नहीं बनाना, और ना ही ऐसा कोई रूल है। बट ऑब्वियसली यूएसए जाने के लिए पासपोर्ट तो चाहिए होगा, बट वो बाद में। टिल नाउ जस्ट फोकस ऑन योर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में जस्ट फोकस ऑन योर एसओपी। ये क्वेश्चन सुनकर मुझे तो कोई नहीं समझ आया टील अभी तक, अगर आपको समझ आया तो उसका आंसर आप कर दीजिए। कौन सा? स्क्रीन पे क्वेश्चन शो आउट हो रहा है अभी तक। आई गेस ये अभी न्यू एडमिशन का पूछ रहे हैं कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आया, न्यू एडमिशन्स हैं, तो न्यू एडमिशन्स वाले वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनका कि आप अपने यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर में नहीं होने चाहिए। सो मुझे ये क्वेश्चन इतना ही समझ में आया है। अगर आप यही पूछ रहे हो तो फिर मतलब इफ़ यू आर इन फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर ऑफ योर स्टडीज़ of your bachelor's, then you can't apply, you are not eligible. अच्छा, काइंडली बच्चों के ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं एफएस, तो एफएससी वाले अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
जी। तो अगर किसी का भी और क्वेश्चन कोई है तो काइंडली वो कमेंट बॉक्स में पुट कर दे। या बिकॉज इट्स अ यू ग्रेड, यू ग्रेड जो है वो शॉर्ट फॉर्म है अंडर ग्रेड की, सो ये प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है। नो यू वॉन्ट गेट एनी वेवर, आपको जो है ना वो टॉफल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और टॉफल एग्ज़ाम वैसे ही उनकी तरफ से स्पॉन्सर होता है, वो आपने खुद भी नहीं करना होगा। आप एक बार सेलेक्ट हो जाएं मतलब इंटरव्यू के बाद, उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी USEFP वालों की है। मतलब आपका वीज़ा इंटरव्यू के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी भी चीज़ के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, नॉट इवन फॉर टॉफल एग्ज़ाम। सो इट विल बी कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड, सो वो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और उसका टॉफल एग्ज़ाम का आपकी सिलेक्शन से कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कितनी है, तो वो उस हिसाब से आपकी प्लेसमेंट करते हैं। सो ये बात का स्टेप है, लाइक मैं चाहूँगी कि इस वक्त आप एप्लीकेशंस पे फोकस करें। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि इस स्कॉलरशिप का क्या फ़ायदा होता है। सो आपको अमेरिका जाने को मिलेगा फ्री में, सो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि इट विल गिव यू अ सेकंड लाइफ, आप इतने स्किल्स सीखेंगे जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। आप जब वापस आएंगे तो आप एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन होंगे। सो बिकॉज आपको चांस मिलेगा कि आप इतने सारे मतलब पूरी दुनिया के लोगों से आप फ्रेंडशिप करें। लाइक नाउ आई हैव फ्रेंड्स विद 20+ कंट्रीज। सो ये इस स्कॉलरशिप की ब्यूटी है या इसकी पावर है, और आपको मौका मिलेगा अमेरिका जैसे कंट्री के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का। उसके बाद ये आपको आगे कैरियर में मदद करेगा, आपकी सीवी में मदद करेगा, आपकी जॉब में मदद करेगा। आपने जो स्किल्स सीखे हैं वो आपके आगे कैरियर में मदद करेंगे। और फिर जब आप वापस आकर यहाँ पर कोई कम्युनिटी वर्क करना चाहोगे तो यूग्रेड आपको उसके लिए भी स्पॉन्सर करेगा। सो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दूसरा ये कि आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हो। लाइक अभी भी आई एम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान US एल्यूमनाई नेटवर्क, सो आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है। सो ऑब्वियसली फ़ायदे तो हैं। सो एक स्टूडेंट कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं अगर इस बार रिजेक्ट होता है? आप कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर अप्लाई अंटिल यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लाइक अगर आपने सेकेंड ईयर में अप्लाई किया, अब आप थर्ड ईयर में हो, तो ऑब्वियसली यू शुड अप्लाई अगेन। और इसकी कोई लिमिट नहीं होती, पर जाहिर सी बात है कि आपको एलिजिबिलिटी देखनी होगी। अगर इस वक्त आप फाइनल ईयर में हैं तो फिर तो आप वैसे ही एलिजिबल नहीं हैं, बाकी कोई लिमिट नहीं है। या दे डू। और ये चीज़ मैंने देखी, लाइक आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट और मैंने काफ़ी जॉब फेयर्स में पार्टिसिपेट किया है। तो ये चीज़ जो है ना आपकी सीवी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। सो ऑब्वियसली रिक्रूटर्स ये चीज़ देखते हैं कि आपको बाहर का एक्सपीरियंस है, क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं। सो या ये फॉर ईयर जी, सिर्फ आप 4 सालों में ही अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। या अगर जो 2 सालों की बैचलर्स डिग्री होती है उसके बाद 2 इयर्स की मास्टर्स होती है, तो उन 2 इयर्स वाली मास्टर्स में भी आप कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज ये अंडर ग्रेड प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। आइल्स टेस्ट इसके लिए नेसेसरी नहीं है, आपने सिर्फ टॉफल देना पड़ेगा, और वो भी आपकी सिलेक्शन के बाद, जो कि ये USEFP आपसे खुद ही दिलवाएगी। देखिए, ऐसा कोई बेस नहीं है कि इस बेसिस पर होती है या इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे उनकी होगी। ये एक ओपन है, मतलब आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, यू कैन अप्लाई। और वो बस ये चीज़ देखते हैं कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कितनी स्ट्रांग है, आपने कितना कम्युनिटी के लिए वर्क किया है, आपने कितना कम्युनिटी को सर्व किया है। सो ये चीज़ें वो देखते हैं। अगर आप अपनी SOP में ये चीज़ें हाईलाइट कर रहे हो तो इसी बेसिस पर सिलेक्शन होती है। और जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई ना, लाइक मैंने जितना टेन्योर वहाँ पे गुजारा था, तो मुझे ये बात समझ आई थी कि उनके लिए 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है कि कम्युनिटी वर्क आपने कितना किया है, और दूसरा ये होता है कि आप में कितनी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। सो ये चीज़ें आई गेस बेसिस हैं, बाकी इसके अलावा एक्सप्लिसिटली उन्होंने कोई भी ऐसी बेसिस मेंशन नहीं की गई।
You're not audible. जी, आई गेस एसओपी की मैं वो पावर पॉइंट आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बट क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आया तो मैं दोबारा से बता देती हूँ कि एसओपी है क्या। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आपने ये शो करना होता है कि आपका पर्पस क्या है। उसके 4 पार्ट्स होते हैं, लाइक 4 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करके इन 4 चीज़ों को मेंशन करें सो दैट विल बी गुड। सो फर्स्ट थिंग आपका इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें आप अटेंशन ग्रैब करते हैं, तो उसमें आप डिफरेंट एडजेक्टिव्स और कोटेशंस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, सेकंड पैराग्राफ में आपने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेंशन करना होता है, और अगर उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका कम्युनिटी वर्क और लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होंगे सो दैट विल बी बेस्ट। थर्ड पैराग्राफ में आपने अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखने होते हैं, बट गोल्स शुड बी रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, करियर और फील्ड। और फिर फोर्थ पैराग्राफ में आपने बताना होता है कि आप मतलब यूएस क्यों जाना चाहते हैं इन गोल्स को परस्यू करने के लिए, यू ग्रेड आपकी किस तरह हेल्प करता है। एंड आई गेस कि ये लाइव सेशन यहीं पे रिकॉर्ड होगा, तो आप फिर पीछे जाकर ये दोबारा देख भी सकते हैं जो मैंने बताया था रेसिपी से। इन्फॉर्मेंस के बाद हमें कोई सर्टिफिकेट, जी, आपको एक नहीं बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। एक तो आपको यूग्रेड का सर्टिफिकेट मिलता है, यूएसईएफपी का। उसके अलावा आपको जॉर्ज मेंसन यूनिवर्सिटी का भी मिलता है, उसकी भी एक्रीडेशन आपको मिलती है क्रेडिट आवर्स की। और दूसरा, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपको सर्टिफिकेट देती है। फिर आप जो कम्युनिटी वर्क करते हो आपको उसके भी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। सो सर्टिफिकेट्स की टेंशन ना करें, वो आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं इसी प्रोग्राम में। You are not audible. I can't hear you.
Can you speak now? No, I can't hear you. ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो इसका आंसर पहले भी मेरे ख्याल में हो चुका है। अगर उसके अलावा किसी और में कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में पुट करते हैं। और हंजला भाई, जी, आपकी एक आवाज नहीं आ क्वेश्चन रही है। आया हुआ है अभी। एक क्वेश्चन आया, वो पूछ रहे हैं कि ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड और एक्सपेंडिचर विल बी पे बाय यूग्रेड। सो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और हर चीज़ यूग्रेड ही पे करता है। मतलब आप बस एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद सारे एक्सपेंसेस वो बियर करता है। और उसके अलावा मतलब आपको एयर फेयर वो देता है। एयर फेयर मतलब जहाँ ये डिपार्चर से लेकर यूएस पहुँचने तक के अलाउंसेस देता है, वहाँ पर बुक्स अलाउंस देता है, वहाँ पर एकोमोडेशन आपकी फ्री होती है, मील प्लान्स फ्री होते हैं। उसके अलावा आपको स्टाइपेंड भी देता है। सो वो इतना आपको देते हैं कि आप आराम से वहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स जहाज़ों में घूम सकते हैं, होटल्स में रह सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। सो या मैम आपको अब आवाज आ रही है मेरी? जी अगर अच्छा, मैंने पहले भी आपसे माजरत की थी कि मेरी वजह से इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी की वजह से मैंने आपका सेशन जो है ना एज यूजुअल ऑन टाइम कैरी नहीं कर सका। हमारे ऑनरेबल सीईओ उन्होंने फिर इसको कैरी किया और आपने बाद में पीपीटी के थ्रू भी मैं कमेंट्स देख रहा था, तो वो प्रेजेंटेशन आपने प्रेजेंट किया बच्चों को, उसके लिए अपने तमाम सामीन और नाज़रीन से और स्पेशली आपसे मैं माजरत था हूँ। आज मेरी वजह से ये थोड़ा सा इशू हुआ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैम जो आपने पीपीटी के थ्रू प्रेजेंटेशन दी है वो आप हमारे साथ शेयर आउट कर दें किसी फॉर्मेट में, कि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में फिर ऑडियंस के साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड हैं उन साथ हम शेयर आउट कर दें वो प्रॉपर। ओके, वो मैं कर दूँगी। और किसी का किसी भी किस्म का यूग्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन, उसकी एप्लीकेशन, उसका सारा प्रोसीजर अभी तक जो मैम ने गाइड किया है वहाँ तक किसी को किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कर दें, इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा। और एक और अनाउंसमेंट है कि ये आज हमारे यूग्रेड से के हवाले से लास्ट सेशन है। इससे पहले तकरीबन 4 सेशन हम कंडक्ट कर चुके हैं और ये लास्ट सेशन है। लास्ट अपॉर्चुनिटी तो नहीं, हमारे फोरम से ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अदरवाइज बाकी लोग भी इस पे अपना प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, बट ये है कि हमने उन लोगों को कलेक्ट किया, उन लोगों से हमने इन्फॉर्मेशन लेके आप तक प्रोवाइड की जो इस चीज़ से अवेयर हैं और जो इसको गेन कर चुके हैं यूग्रेड को। जी, एक क्वेश्चन आया था कि टॉफल लाजमी है। सो टॉफल इस पॉइंट पर लाजमी नहीं है, और जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब यूग्रेड खुद ही आपसे दिलवाएगा। और दूसरा ये कह रहा था कि एवरी डिग्री होल्डर कैन अप्लाई। सो यस, एवरी डिग्री होल्डर कैन अप्लाई, लाइक बैचलर्स डिग्री होल्डर। और डिग्री होल्डर नहीं, करंटली उसमें एनरोल्ड हो बैचलर में। जी, पाकिस्तान स्टडी के स्टूडेंट जा सकते हैं बिल्कुल। 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स नहीं जा सकते अगर आपका जो डिग्री है वो 4 इयर्स की है। अगर 5 ईयर डिग्री है, लाइक टोटल 10 सेमेस्टर्स होते सिलेक्शन होते होते आप जाओगे फॉल 2023 में, तो तब तक तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई होगी। और यूग्रेड ये डिमांड करता है कि जब आप वापस आओ तो आपके पास एटलीस्ट एक सेमेस्टर हो जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सको अपनी यूनिवर्सिटी में। सो अगर आपकी जो डिग्री है वो 10 सेमेस्टर्स की है तो आप कर सकते हो अप्लाई 7 सेमेस्टर में, अदरवाइज नहीं कर सकते। नो, इस
उसकी कोई वो नहीं हुई है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्वालिटी एक्सीलेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इवन इन इंटरव्यूज़ में भी उनको पता होता है कि आप पाकिस्तानी हैं और इंग्लिश आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सो दे आर कंसिडरेट। बट ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही ख़राब होनी चाहिए। और अभी इस पॉइंट पर एसओपी पॉइंट पर तो इंग्लिश क्वालिटी स्पीकिंग क्वालिटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। UGRAD बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है अंडर ग्रेड की, so अंडर ग्रेजुएट। कम्युनिटी वर्क नेसेसरी तो नहीं है, बट अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो आप ये शो कर सकते हो कि आप करना चाहते हो और आपको मौका नहीं मिला, क्योंकि वो मतलब उनका मकसद यही होता है, कम्युनिटी वर्क को वो बहुत अच्छा समझते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि नेसेसरी है कि आपने किया हुआ हो, पर आप इसको मेंशन ज़रूर करें कि आप करना चाहते हो। No, it's not like this. You don't have to pay anything. So ये fully funded program है। लाइक इवन आप जब अपने डिपार्चर के लिए जाते हो तो अपने सिटी से एयरपोर्ट आपका जितना दूर होता है वो उसकी भी रिइंबर्समेंट देते हैं आपको। इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कौन से कोर्सेज ले रहे हो। अगर उन कोर्सेज में प्रेजेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होगी तो आपका प्रोफेसर बोलेगा आपको देनी होगी। उसके बाद यूग्रेड की तरफ से सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि आपने कल्चरल प्रेजेंटेशन देनी होती है, जिसमें आपने अपना कल्चर रिप्रेजेंट करना होता है। दैट्स इट। सी है लाइक इफ यू आर एलिजिबल तो उसके बाद सीजीपीए मैटर नहीं करती। लाइक ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी 3 से थोड़ी सी कम होती है सीजीपीए, तो वो भी चले जाते हैं। बट जो यूएससीएफपी वालों ने रिक्वायरमेंट दी है वो 2.5 दी है, सो 2.5 सीजीपीए से ज़्यादा होनी चाहिए।
और आप उसको अपनी एसओपी में, अपनी एप्लीकेशन में इस तरह भी कवर कर सकते हो कि आपकी सीजीपी क्यों लो है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में थे, आप कम्युनिटी के लिए वर्क कर रहे थे। अगर आपका वो वर्क है और आपकी सीजीपी कम है तो आप उसको कवर कर सकते हो। अरे गाइस, आपका अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आप पुट करें, आपको इंशाल्लाह आंसर करेंगे। हमारे होस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अभी। इंटरव्यू क्वेश्चंस लाइक मैं यही कहूँगी कि उसको अभी आप उसकी टेंशन ना लें और ना ही वो इस पॉइंट पे डिस्कस करने चाहिए। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वी विल हैव अनदर सेशन लाइक दिस जिसमें हम इंटरव्यू की बात करेंगे। पर टिल नाउ आप अपनी एप्लीकेशन पे फोकस करें। और इंटरव्यू क्वेश्चंस ज़्यादातर यही होते हैं कि आपने जो एसओपी में लिखा हुआ होता है वो उसी को वेरीफाई करते हैं और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं। सो यही होता है। बेसिस एक्सप्लिसिटली उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं की हुई, बट बेसिस होती ये है कि आप कितने एक्टिव हैं, कितने मोटिवेटेड हैं अपनी फील्ड से। आप लाइक आपकी जो भी फील्ड ऑफ स्टडी है आप उसमें काम करने के लिए कितने मोटिवेटेड हैं, आप कम्युनिटी को सर्व करने के लिए कितने मोटिवेटेड हैं और आप कितने अच्छे लीडर हैं। सो अगर ये चीज़ें उनको आपकी एसओपी में, आपकी एप्लीकेशन में दिखाई दे देती हैं तो सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बाकी बेसिस सिर्फ एलिजिबिलिटी है, वो आपने देखने की 2.5 अबव हो आपकी और आप जो है वो फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर में ना हो। अदरवाइज इसके अलावा और कोई बेसिस नहीं है। जी सबसे पहले मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जो मेन चीजें हैं वो अभी तक अपने एप्लीकेशन ड्यूरिंग जो अप्लाई करें उसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, और पहले भी बता चुके हैं तमाम डिग्रीज वाले अप्लाई कर सकते हैं। सीजीपी आपकी वो है जो आपको मैम को बता दी। अगर कुछ किसी कोई चीज़ मिस आउट होगी, हुई न्यू अभी ज्वाइन कर रहा है, तो काइंडली वो जैसे सेशन एंड होता है उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल हो गई, आप उसको ओपन करें और वो दोबारा लिसन कर सकते। मैम ने स्टार्ट के अंदर आपको स्लाइड्स के अंदर मुकम्मल एक डिटेल के साथ जो मेन मेन पॉइंट्स है वो चीज़ें मेरे ख्याल में बता दी। अगर ड्यूरिंग आपको एप्लीकेशन आपको कोई भी मुश्किलात आ रही हैं, कुछ कोई ऐसा सवाल है जो आपके जहन के अंदर जो अप्लाई के दरमियान आ रहा है, बात की जाने वाली बातों को एक बार लेफ्ट आउट कर दें। तो वहाँ पर कितना खर्चा मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, मैं कैसे जाऊँगा, कैसे पासवर्ड बनेगा, वो चीज़ें छोड़ दें। अभी जो ड्यूरिंग एप्लीकेशन आपको इश्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो एज सुन एज पॉसिबल पुट डाउन करें कमेंट बॉक्स में। जो हमारी स्ट्रीम कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं उनको अभी तक कोई चीज़ समझ नहीं एप्लीकेशन प्रोसीजर में, तो वो अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सीईओ साहब ने आप लोगों को क्लियर कर दिए कि रिकॉर्डिंग आप लोगों की ये वाली हमारे सेशन की इंटरनेट पे अवेलेबल है। इससे पहले वाले सेशंस की भी अवेलेबल है। आप लोगों के ये वाले जो क्वेश्चन हैं, वहाँ पे कितना खर्चा होता है, कब जाना होता है, मैं कितने दिन रह सकता हूँ, मैं किस नेस्ट में अप्लाई कर सकता हूँ, वो सारा रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। जो कॉन्टिन्यूस मैसेजिंग देख रहे हैं उनको अगर किसी भी किस्म की एप्लीकेशन के हवाले से कन्फ्यूजन है तो वो अपना क्वेश्चन पुट करें।
कि मेन क्वेश्चन दोबारा फिर एसओपी वाला आया है, तो मैम मेरे ख्याल में 3 से 4 मत वो बता चुकी हैं आपको। तो वो आपको जो स्टार्ट की वीडियो जब स्टार्ट होगी अगेन एंड होगा, उसके अंदर एक स्लाइड के अंदर मैम ने जो मेन पॉइंट उसके अंदर तकरीबन 2 स्लाइड्स हैं, उसके अंदर मुकम्मल एक्सप्लेन कर दिया। जैसे सेशन एंड होगा तो आपने वहाँ से उसको वॉच आउट करना है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछिए। और एक भाई का फिर क्वेश्चन वही है कि मेडिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, को वो अब सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो भी जो सी भी डिग्री। जी आई थिंक स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस नहीं आ रही है मेरे ख्याल में अब। ओके, तो हंसा भाई आप इसको एंड डाउन कर दें। मैम आप वैसे अभी थोड़ा सा स्ट्रीम का हमारा टाइम भी है, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि आपको यूग्रेड के बारे में कैसे पता चला था, आपने कैसे अप्लाई किया, अपनी टोटल जर्नी आप 2-3 मिनट में हमारे साथ अगर शेयर करें तो। मुझे अपने प्रोफेसर के थ्रू पता चला था, और लाइक उस टाइम मैंने अप्लाई किया था 2019 में। सो मेरी सिलेक्शन तो एक मोटिवेशनल स्टोरी है बहुत बड़ी। सो 2019 में अप्लाई किया था और मैं गई थी 2021 में, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था और फिर सारे चांसेस, मतलब सारी होप्स हमारी ख़त्म हो गई थी कि हम शायद नहीं जाएंगे। और मुझे रिजेक्शन ईमेल भी आ गया था कि ड्यू टू कोविड हम जो है सेलेक्ट नहीं कर रहे, और मतलब इसलिए सॉरी का। और फिर अचानक से 2021 की जनवरी में, लाइक वो जो मैंने 2 साल पहले एप्लीकेशन फिल की थी, मुझे उससे रिलेटेड ईमेल आई, क्योंकि बीच में कोई भी कोहॉर्ट नहीं गया था। तो उन्होंने कहा था कि हम दोबारा सिलेक्शन करें, और फिर इस तरह से मेरी सिलेक्शन हुई थी। और उसके बाद मैंने जिस तरह पहले मेंशन किया कि ये बेस्ट एक्सपीरियंस है, दिस विल गिव यू द सेकंड लाइफ। और मेरा मतलब मैं काफ़ी, जिस तरह हम होते हैं यहाँ पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फ्रेंड्स पर, फैमिलीज़ पर। और मेरी जहाँ पे प्लेसमेंट हुई वहाँ पर मैं अकेली पाकिस्तानी थी। सो सबसे बड़ा शौक तो मुझे उस वक्त लगा था। लाइक मैं खुश नहीं थी ज़्यादा कि क्यों, मतलब 100 स्टूडेंट सेलेक्ट होकर जा रहे हैं, और लाइक काफ़ी 2-3 एक यूनिवर्सिटी में भी थे, लेकिन मेरी एक यूनिवर्सिटी में अकेली थी। लाइक पूरी सिटी में मैं अकेली पाकिस्तानी थी। सो शुरू में मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ था, लेकिन इस चीज़ ने मुझे जितना एक्सपीरियंस दिया शायद वो कोई और चीज़ नहीं दे पाती। सो ओवरऑल यही है कि आपके हर कंट्री से फ्रेंड्स बनते हैं। वो आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो थ्रू इंस्टाग्राम आज तक मुझसे कनेक्टेड हैं, और वीडियो कॉल्स पर बात करते हैं। सो आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा ये कि आप स्किल सीखते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ सफिशेंसी की, लीडरशिप की, कम्युनिकेशन की। सो इस हिसाब से लाइक मेरा एक्सपीरियंस बेस्ट था अभी तक, और इंशाल्लाह ये आगे कैरियर में भी आपकी हेल्प करता है। अब जब हम वापस आए हैं तो यूग्रेड हमें सपोर्ट करती है कम्युनिटी वर्क करने में। उनके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें वो आपको फंड करते हैं, आपको स्मॉल ग्रांट्स देते हैं कि आप कोई भी अपना इनिशिएटिव लो। सो जिस तरह मेरी फील्ड बिजनेस है, तो मतलब ये मेरे लिए और ज़्यादा बेटर है। तो अगर कोई भी मेरा इस तरह का प्रोजेक्ट होगा तो उसमें भी मुझे वो फंड करेंगी। सो यही चीज़ है ना कि आप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हो, जो कि अब हम हैं। उसके अलावा अभी हमारी काफ़ी रीयूनियंस होती हैं, हमारे काफ़ी इस तरह की इंटरेक्शन होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। सो इट वाज बेस्ट। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, आज आपने हमें टाइम दिया और अपना एंड में आपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया। हमारे नाज़रीन और सामीन, आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप अपना, जिनको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जिन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया, वो हमारा सेशन आई थिंक ये मोर देन 50 मिनट्स के राउंड अबाउट अभी तक हमारी स्ट्रीम हो चुकी है। तो आप वहाँ से हमारे सेशन विजिट कीजिएगा, हमारे इससे पहले सेशंस हैं वो विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको यूग्रेड के हवाले से किसी भी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। हमारी हर कोशिश चाहिए, हर सेशन में यही कोशिश चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएं आप लोगों के लिए इसको, और इन यूग्रेड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हों वो हम पूछ के उनका आंसर आप तक पहुंचा सकें, ताकि किसी एप्लीकेंट को, किसी स्टूडेंट को ये ना हो या वो ये ना कह सके कि यार इन्फॉर्मेशन मेरे तक पूरी नहीं थी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अपने सेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। स्पेशली थैंक्स टू माय गेस्ट मैम स्किन ज़ारा, और बाकी जितने भी ऑडियंस अभी तक हमारी देख रहे हैं और जिन्होंने क्वेश्चन पूछ किए उन सबका भी थैंक्स। और अब इस सेशन को क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ किसी और नए इंफॉर्मेटिव सेशन में मुलाकात होगी।
तब तक के लिए अपने मेज़बान मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।